तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची वरळी विधानसभा उमेदवार शिवसेना उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यांच्याकरिता पद्मशाली चौक वरळी मुंबई येथे काल निवडणूक प्रचार सभा झाली। मुख्यमंत्र्यांना पाहण्यास त्यांचे विचार ऐकण्यास तेलुगू समाजाने मोठी गर्दी केली होती। मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात जय तेलंगणा, जय महाराष्ट्र, जय बाळासाहेब अशा घोषणा देऊन केली। मुख्यमंत्र्यांनी तेलुगू आणि हिंदी भाषण करून म्हणाले, निजामाबाद करीमनगर जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे स्वागत करण्यात येते त्यापेक्षा भव्य स्वागत मुंबईतील तेलुगू जनतेने केल्याने मुंबईत आहे असं वाटत नसून तेलंगणात आहे असे वाटतंय। मोठ्या संख्येने तेलुगू जनसमुदाय बघून आनंद झाला। मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, निजामाबाद करीमनगर जिल्ह्यातील पद्मशाली लोक 100-150 वर्षापूर्वी मुंबईत येऊन तेलंगणा, करीमनगर, निजामाबाद जिल्ह्याचे नाव रोशन केले। मुख्यमंत्र्यांनी आदित्य ठाकरे यांना विजय करण्याचे आवाहन वरळीतील जनतेला केले। मुंबई वारलीకి వచ్చినట్టుగా నాకు అనిపించడంలే నిజామాబాద్ కరీంనగర్ పోతే మన వాళ్ళని కలుసుకున్నప్పుడు ఎంత సంతోషం ఎంత సాదరంగా ఆహ్వానిస్తారో ఇయాల వర్లి శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కూడా అంతే అఖండమైన స్వాగతం పలికి ఆదిత్య ఠాకరేని ఎన్నికల్లో గెలిపించడానికి మద్దతు నిలబడ్డందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మిత్రులారా। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींचा बालाजी मंदिरात बालाजी देवस्थानचे अध्यक्ष श्रीकृष्ण हरी स्वामींच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। मुख्यमंत्र्यांनी आदित्य ठाकरे समवेत वरळीतील बालाजी मंदिरात मार्कंडे महामुनींचे दर्शन घेतले। समस्त तेलुगू लोकांच्या वतीनं दी मुंबई आंध्रा महासभा आणि जिमखाना ट्रस्टचे अध्यक्ष रमेश मंथेना व मार्कंडे देवस्थानचे कार्याध्यक्ष वासाला श्रीहरी यांनी मुंबई शहरात तेलुगू भवन बांधण्यास मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना निवेदन दिले।